all, welcome back to your very own channel Classes with Neha. Let's dive into question number 5 from exercise 1.1 rational numbers. The question says, name the property under multiplication. Now the first part for this is minus 4 upon 5 into 1 is equals to 1 into minus 4 upon 5 is equals to minus 4 upon 5. How will we proceed? सबसे पहले हम माइनस 4 अपॉन 5 को a एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. सो व्हाट विल दिस बिकम? a into 1. ऑल राइट. ठीक है. इक्वल टू एज इट इज अगेन 1 into as it is माइनस 4 अपॉन 5 को अभी मैंने a एज्यूम करा था. सो दिस इज a. अगेन माइनस 4 अपॉन 5 इज a. अब प्रॉपर्टी इज a into 1 is equals to 1 into a is equals to a. That means if we multiply any rational number a with 1, we will get the same rational number a, and this property we all know is the multiplicative identity. Okay, so a into 1 is equals to a is the property and the name is multiplicative identity. All right, coming on to the b part, minus 13 upon 17 into minus 2 upon 7 is equals to minus 2 upon 7 into minus 13 upon 17. सबसे पहले if I assume it to be a, minus 13 upon 17 को I have assumed it to be a into as it is minus 2 upon 7 I have taken as b. Now this side becomes a into b. On this side we can easily see that terms are same, only they are being swapped. है ना, उल्टी हो गई है. पहले यहाँ पे ये आ रहा था, इसमें पहले ये आ रहा है. यहाँ पे ये बाद में आ रहा था, यहाँ ये पहले आ रहा है. सो इसकी वैल्यू क्या है? b. और माइनस 13 अपॉन 17 की हमने अभी अभी देखी a है, तो यहाँ पे हम a सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो दिस इज a into b is equals to b into a. As we all know, this property is known as your commutative property. So commutative property is the answer for your b part. Coming on to the third part of the same question, it says minus 19 upon 29 into 29 upon minus 19 is equals to 1. We are supposed to name the property. अगर मैं minus 19 को a suppose करूँ और 29 को b, okay? So minus 19 upon 29 becomes a upon b. Now multiply sign as it is. 29 को अभी मैंने क्या एज्यूम किया था? b. So I'll put b over here. और minus 19 को मैंने क्या एज्यूम किया था? a. So it would be b upon a. This is equals to 1. Why? b से b कैंसिल हो रहा है, a से a कैंसिल हो रहा है. All right. And as it is you can see minus 19 upon 29 का रेसिप्रोकल है 29 upon minus 19. Why? Because जो इसका न्यूमरेटर था वो इसका डिनोमिनेटर बन गया है, while जो इसका डिनोमिनेटर था वो इसका न्यूमरेटर बन गया है. तो हम किसी भी रैशनल नंबर that is a upon b को multiply करें उसके inverse के साथ, that is b upon a, we are getting 1 as the answer. So this is the multiplicative inverse property, which is a upon b into b upon a is equals to 1. All right. Now let's fix question number 6. It says multiply 6 upon 13 by reciprocal of minus 7 upon 16. Now what is being asked in the question? सबसे पहले we are supposed to find out the reciprocal of minus 7 upon 16 और जो भी आए उसको हमें multiply करना है 6 upon 13 के साथ. All right. Now reciprocal of minus 7 upon 16 is 16 upon minus 7. All right. क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. अब हमें इससे मल्टीप्लाई करना है 6 upon 13 को. तो दिस इज 6 upon 13 into 16 upon minus 7. All right. अब आप देखिए कुछ भी आपस में कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा. सो हाउ विल वी मल्टीप्लाई? न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर. 16 into 6 is 96. All right. And 13 into 7 is 91. But plus minus is minus, so I'll get minus 91. But according to standard form, we are not supposed to leave any negative sign in the denominator. So what I'm going to do? Divide and multiply by minus 1. All right. Now 96 into 1 is again 96. And 91 into 1 is 91. Plus minus is minus. And minus minus becomes plus. So minus 96 upon 91 is the answer for the sixth part. Let's come to question number 7, which is as easy as cutting a lemon. Tell the property that allows you to compute 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3 as 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3. अब हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी बतानी है जिससे हम ये कंप्यूट या कैलकुलेट कर सकें. If I assume 1 upon 3 to be a, this would be a into 6 को if I say b and 4 upon 3 को if I say c. This is a into b into c. As means as it is.
Now 1/3 was A, 6 was B and into 4/3 is C. अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, पहले हम B एंड C का एसोसिएशन कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज किया और जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम A के साथ कंबाइन कर रहे हैं, जबकि हम इस साइड में पहले A एंड B को एसोसिएट कर रहे हैं और उसके बाद जो उसका रिजल्ट आ रहा है हम कंसिक्वेंटली C के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी वी ऑल नो इज associativity or the associative property. So the answer for question number 7 is associativity. Let's not get late with question number 8. So let's start. Is 8/9 the multiplicative inverse of -1 1/8? Why or why not? Now what is the question given? 8/9 is already the multiplicative inverse of -1 1/8. It is given. So this is B/A. And this mixed fraction is given as A/B. If we multiply both these terms and we get the answer as 1, then we can say that 8/9 is the multiplicative inverse. And if we get the answer other than 1, then 8/9 is obviously not the multiplicative inverse or the reciprocal. How will we proceed? -1 1/8 हमें given है. इसको सबसे पहले we will convert it in the improper fraction. 8 ones are 8. 8 plus 1 9. So this is -9/8 in improper fraction. Now -9/8 is the original fraction. इसको अगर हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, which is 8/9, it should be equals to 1 because I have already written the property. A/B into B/A should be 1. तो 8 से 8 कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है. What are we getting? -1. लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए मेरे पास क्या आना चाहिए? 1. But I am not getting 1. I am getting -1. So I can easily say that 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8. Why? Because A/B into B/A is equals to -1. Okay.